I will welcome Pulkit Samrat on stage with me for the Jagran Film Festival 2023. गली में मारे फेरे पास आने को मेरे गली में मारे फेरे पास आने को मेरे कभी परखता मैं ना हर किसी के साथ ऐसे कॉन्वर्सेशन में खुद चालू करता हूँ फिर I give the opportunity to the audience, okay? But with you, because I know how cool he is. I'm more excited about the audience than Yeah, you right see, now. नहीं क्योंकि हमारी तो चलती रहती है ना. और याद रखना वापस हमारे पास ही आना है. But no, actually we'll give audience the chance and जब भी कुछ question होगा बीच में जो I want to ask, I will pitch in. But before that, 100 plus crores for Fukrey 3 guys. Well, thank you so much everybody. This is only possible because of everybody's love for the film. हमने सिर्फ फर्स्ट फुकरे बनाई थी. फुकरे 2 और फुकरे 3 जो है वो लोगों ने बनाई है, हमने नहीं बनाई. So thank you so much for that. We watched the movie 3 days before the movie released, and we all unanimously came and told you and the entire team that this movie is gonna work with the audience. Of course, when you are an actor, you are looking for that first reception, and you guys were also watching the movie for the first time then. This is a celebrated franchise, okay? और ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपने कहा जनता ने बनाई है. फुकरे is a franchise which has been built by the audience for the audience. Do you feel a sense of responsibility or do you feel a sense of excitement when you do a fukre vis-a-vis your other films? See, definitely there is excitement every time because जैसे कि बाकी सब फुकरे के फैंस हैं, हम भी फुकरे के फैंस हैं. We are fans first and then we become actors for the film. So whenever we decide to come out with a new part, we also make sure कि यार हमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, as much as you know from the audience's perspective. Always there is a hit, there is a miss. Something will be liked by majority of the people, something might not be liked by somebody. But that also happens during our team meetings and our readings and everything. So वो excitement के साथ थोड़ी सी anxiety भी होती है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है. Are we, we should just be able to deliver to their expectations. और यही anxiety और excitement के चक्कर में हम लोगों ने as a team एक नया term coin किया जिसको हम कहते हैं anxietement. So we were very very excited before the release of the film. So the day you were watching it, that was actually day one when we were also watching it. We hadn't watched the movie before you watched it as well. So हमने साथ में ही देखी थी and if you remember my hands were trembling. I was not able to sit calmly. I was very jittery. I was walking up down the stairs to the entire auditorium. That was excitement in me and now there is only excitement and only gratitude. No, that's true. And of course, I saw that. But you also saw the reaction whenever you and Varun came on screen, especially, and Pankaj sir's dialogues. I feel it's a hilarious film. I felt that is a film that anybody would want to watch because it leaves you with a smile. Now, this is just a compliment, it was not a question. We will take questions from you guys. If there's something that I want to chip in, I will say. And हेलो Hi. प्रवीण पांडे पांडे जी जी कैसे हैं आप? कहिए. बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? Very very excited. आओ सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं और आपकी फिल्म करियर कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने बहुत ही नया सवाल पूछा मुझसे Yeah. क्योंकि मुझे सब पुलकित से पहले दिल्ली का लौंडा बोलते हैं. सो उसी में आपके सवाल का जवाब है कि आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई एम बेसिकली अ दिल्ली बॉय. और जैसे दिल्ली से बहुत सालों पहले एक दिल्ली का लौंडा निकला था, शाहरुख खान. या उनसे इंस्पायर होके ये दिल्ली का लौंडा निकला. और आज आई थिंक द यूनिवर्स हैज़ बीन सो ब्लेस्ड, so blessing and so kind towards me कि today Jawan and Fukre both are running together at the theaters. So I think that's a big journey that I've had so far. sir, fantastic. It's a really big thing for me. you know, when you say that you started from Delhi, of course you didn't have any godfather. And हमने ना बहुत सारे ऐसे sessions किए हैं casting directors के I साथ. only had God and I only had my father That's separately.
But we had done a lot of sessions with those, with the casting directors, and there were a lot of questions that people kept saying that, you know, we come from different cities. It was very difficult for us. In the beginning, was it difficult for you at all? And how did you deal with those days when you had to stay away from your family for your dreams? Yeah, to be really frank, this seems very unreal and very ऐसे कि हाँ ठीक है अभी philosophy झाड़ रहा है, but my philosophy has always been to behave, act, sleep, speak, talk, walk just the way I would when I have success. Okay, so and I think that is the most important thing. If you just believe in something and you take a baby step towards it every single day, your manzil also, your destination also takes a few steps towards you. And that is exactly what happened with me. I came to Mumbai and I started at Kishore Namit Kapoor acting classes. While I was finishing that course, मेरे सर पे pressure आ चुका था कि अब आप दिल्ली वापस आ जाओ, घर आ जाओ, कुछ हो तो रहा नहीं है तुम्हारा वहाँ पे. And the moment I reached back Delhi, I was simultaneously doing a lot of auditions, getting rejected at a lot of auditions. सो मैंने कहा ठीक है अभी घर वालों की सुनने के लिए थोड़ा टाइम चले जाता हूँ, फिर दोबारा कुछ चाबी घुमा के वापस आऊँगा. मैं घर पहुँचा ही था और मुझे क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए कॉल आ गया बिकॉज दे सम हाउ हैपन टू सी सम वर्क ऑफ माइंड समवेयर केप्ट अंडर सम सीडीज और वो उनके हाथ लगा, उन्होंने देखा, उनको पसंद आया एंड नेक्स्ट डे आई मेट एकता. I did another reading and really thankful to her for choosing me and believing in me and you know scouting me out of the group and deciding कि हाँ इसको मैं बनाऊंगी hero and she did that and within 2 nights I think so within 2 nights my life was changed. I was a household name and Laksh Virani was one of the most loved characters. So yeah, life just I wouldn't say that it throws surprises at you, but it will always keep you happy if you believe in it. When this happened, how did your family react to that? या मेरे पापा तो मेरे पीछे चप्पल लेके भागे थे और मैं एक सोफे से दूसरे सोफे पे छलांग मार रहा था. दैट वेरी विविडली आई रिमेंबर. बट माई मॉम शी हैड always been very supportive. She is the reason why I got into creative arts as well. She is the reason why I was the only guy in my school who was part of a Kathak class and I was training in Kathak till my 7th standard. She was the reason why I was a part of my music class, why I would always be part in extracurricular activities, why I would always do dandiya ras during Janmashtami and do you know various kind of dances and train in them. She has been the guiding force for me forever. And फिर मासी मम्मी की वजह से मासियाँ और मेरी बहुत लंबी फौज है यार. I have like 3-4 chachis, I have 4-5 masis. So many women in the house when they are chudding on all the men कि भैया जाके करने दो. So that really worked in my favor. So all the women actually championed your cause. They did. They always do. That is true. That is true. Anybody who has a question here? विनोद, मैं hi. आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब आपने बिट्टू बॉस बनाई थी. Okay. और उसके बाद मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज़ देखी. फिर आता है हाथी मेरे साथी. आपका लुक देखा मैंने और मुझे बहुत पसंद आया मुझे. तो मैं इसीलिए पसंद आया ना क्योंकि उसका नाम भी विनोद हो सकता था पिक्चर में. नहीं सर, मुझे एक्चुअली वो चाहिए भी नहीं था, लेकिन आपका लुक ना मुझे बहुत पसंद आया था. तो मैं ये सोच रहा कि उस तरह का आप आगे करना चाहते हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. हाथी मेरे साथी एक ऐसी फिल्म है जिसे बनाने में हमें 2 साल लगे बिकॉज वी वर एक्चुअली शूटिंग इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट्स और हमारे टाइमिंग्स फिक्स थे कि हम सिर्फ इतने ही घंटे शूट कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद जो जंगली हाथी हैं वो पानी पीने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं और वो यहीं से क्रॉस करेंगे. सो वी हैड टू लीव द फॉरेस्ट एंड गो बिकॉज दे वुड अदरवाइज अटैक अस. एंड वी हैड अ वेरी क्यूट एलिफेंट विद अस हु वाज शूटिंग, हु वाज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. तो उसको भी बचाने के लिए क्योंकि उसको भी सूंघते हुए बाकी के हाथी आ जाते थे. एंड so yeah, it was a very tiring film to shoot, but one of my most cherished experiences in life. And sadly, COVID came और ये जो मूवी है उस टाइम पे आई तो ज़्यादा लोग इस मूवी को देख नहीं पाए. That's why I really appreciate you watching it and appreciating me in that. Having said that, I think I'm always open to complex characters that are rooted
characters that are a little different from what I am in real life. And I love playing to the gallery. And wherever I get a chance to do that, I would definitely love to. Hi. I am Anushka. Hi, Anushka. So I am actually very happy to see you today because you're looking so cute, and my heart is literally racing right now. I don't know how to speak, but yeah, I wanted to ask you about your fukrey journey from like first fukrey and right now. इतने साल से मैं भी मुंबई में हूँ, मुझे आज मिली हो तुम यार, अनुष्का. Okay, so my journey from fukrey to fukrey 3. ठीक है, मुझे लगता है बताते हुए मैं भी थोड़ा नॉस्टैल्जिया में चला जाऊंगा, and I will try to not keep it long and boring for everybody. It's okay, you can talk like for us. अरे आपके साथ हम चाय पे और बातें कर लेंगे यार. But yeah, so first fukrey actually happened. I'll tell you, this is very interesting क्योंकि मेरी मूवी आई थी बिट्टू बॉस, और उसमें जो मेरा गाना है किक लग गई, that was playing on the television while my producer Ritesh Sidwani, he was jogging on the treadmill in the morning. तो उन्होंने जॉग करते हुए टीवी पे मेरा गाना देखा और उन्होंने मृग को कॉल किया जो फुकरे के डायरेक्टर है कि यार ये एक नया लड़का है, इसको बुलाते हैं और टेस्ट करते हैं, एक बार देखते हैं कैसा काम करता है. लुकिंग गुड. सो मृग सेड कि मैं अभी इसी का गाना देख रहा था एंड आई वाज जस्ट गोना कॉल यू कि मैं हनी को बोलता हूँ. हनी इज़ बेसिकली हनी त्रिहान, ही इज़ आवर कास्टिंग डायरेक्टर फॉर फुकरे. एंड सो ही सेड कि मैं हनी को बोलता हूँ, मैं भी यही सोचा था कि इसको बुलाते हैं. ही कॉल्ड हनी त्रिहान एंड हनी फ्रॉम द अदर साइड सेज अरे मैं आपको ही कॉल करने वाला था कि एक नया लड़का आया है, इसका काम अच्छा लग रहा है, इसको बुलाते हैं. So eventually I was called, I was tested, and it turned out to be really nice. And so I got selected for the film. फिर हमने रीडिंग स्टार्ट करी, और जब मैं पहली बार चूचे से मिला, this is also very interesting. You know, I think it's the best love story on screen, and we should be awarded the best on-screen pair. But जब मैं पहली बार चूचे से मिला, तो हम दोनों को एक दूसरे को देख के रियलाइज हुआ कि अबे तू, and he's like हाँ. He had already auditioned me for something else. He was assisting Nandini, who's also one of the best casting directors we have in the industry. So he used to assist her before he got into acting. And जब मैं अपने auditions दे रहा था from those Kishore Namit Kapoor days that I was talking about, both of us didn't realize कि वो मेरा audition ले रहा था और मैं उसका audition दे रहा था. And so we already knew each other just by chance at that time. And from there, this friendship just began, and we started working on the characters. We did some workshops. We spent a lot of time together so that we could be the best friends on this planet. We were forced to do that, and we were forced to be best friends, but we came out of it as family. So I'm very happy, and that is what gave us Fukrey Part 2 and Part 3 as well. Okay, thank you. Thank you. Yes, hi. हेलो सर, आई एम योर बिग फैन. Thank you. सर पहले तो सर आपकी जॉ लाइन बहुत सेक्सी है. Thank you. मीडिया ने बस ऋतिक रोशन को ऐसे ये मैंने अनिल जी से ही सीखा है. यस सर. Thank you. वैसे मेरी भी जॉ लाइन्स है, बट आपकी जैसे नहीं है. नहीं, तुम्हारी एब्स है ना. कुछ नहीं है सर अभी. सर मेरे क्वेश्चन यही है कि सर जो आप ऑडिशन देना जब स्टार्ट करा था, तो लाइक जब आप रिजेक्ट होते थे तो वो फीलिंग मतलब बहुत बैड होती थी, पता है. लेकिन सर आप वो कैसे फेस करते थे और बार बार जाते थे आप, नए नए ट्राई करते थे? एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है रिजेक्ट होके जो लोग निराश होते हैं वो वही लोग होते हैं, और मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस इस तरह का होता है. जब आप इस तरह से सोचते हैं कि मुझे नहीं मिला, किसी और को मिल गया, तो यू आर मोर बॉदर्ड अबाउट कि किसी और को क्या क्या मिल रहा है. द डे यू विल स्टार्ट ओनली बीइंग बॉदर्ड अबाउट आपको क्या मिल रहा है और आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, आई थिंक इट विल जस्ट बिकम अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस. इट्स अ बेसिक थिंग. अगर आप भी कल किसी का ऑडिशन ले रहे हैं, अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं, इट्स वेरी नेचुरल कि आप भी 100 लोगों का ऑडिशन लेंगे, उसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करेंगे. करेक्ट. 98 लोगों को आप रिजेक्ट ही करेंगे, बट वो रिजेक्शन सिर्फ उनके टैलेंट के बेसिस पे नहीं है. प्रॉबली हो सकता है कि उनका कोई एक्स फैक्टर, या उनकी आँखें, या उनकी स्पीच पैटर्न, या जिस तरह के वो दिखते हैं, या जिस तरह की उनकी आवाज़ है, वो किसी और रोल में ज़्यादा फिट होते हैं, आपकी इस पर्टिकुलर फिल्म में नहीं होते.
तो लोग इस बात को बिल्कुल भी यू नो स्ट्रेस नहीं देते हैं और इस बात को समझते नहीं हैं एंड दे गेट इनटू कंपैरिजंस. द डे यू गेट इनटू कंपैरिजंस यू आर डूम्ड. आई थिंक कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो इवन जवान के बाद फिर शाहरुख खान भी यही सोच रहे होंगे कि यार मेरी इतनी चली फिर किसी और की इतनी चल गई. ऐसे यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय सक्सेस, यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय दैट प्रोसेस ऑफ रीचिंग वे यू वांट टू रीच. सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ, यू विल नेवर फील रिजेक्टेड. हाय पुलकित, हाय नयन. बहुत अच्छा सेशन हो रहा है, 3 दिन से मज़ा आ रहा है. Nice. तो मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है. तो जब फुकरे आई थी तो हम लोग स्कूल में थे, जब हमने देखी पागल हो गए. फुकरे जब आई 3-4 बार तो हॉल पे देखी, फिर तो डीवीडी आ गई थी. बट स्टिल फुकरे में बहुत अच्छा काम था. उसके बाद फिर मैंने आपको तैश में जब देखा, तो तैश में तो आपने कत्ल ही कर दिया था यार. या तैश में योर लुक वाज आल्सो गुड, द फिल्म ओवरऑल वाज वेरी रॉ एंड पैशनेट, बट बहुत अच्छी फिल्म थी. बट आपको जब भी मैं देखता हूँ ना तो ऐसा अपनापन सा लगता है, क्योंकि दिल्ली से तो हुई, आप ऐसे चिल से लौंडे लगते हो. बट स्टिल वांटेड टू आस्क कि इफ नॉट एन एक्टर देन व्हाट प्रोफेशन वुड हैव यू गॉन फॉर, लाइक नॉट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, देन व्हाट वुड हैव यू गॉन फॉर? First of all, thank you so much for You're appreciating my work. That's what we work for, apart from awards and money. But yeah, मुझे ना actually बचपन से ही I'm very fascinated by magic as well. Oh. So magic, dancing, performing on stage, singing, and just playing to the gallery. This has been my poison, if I can put it that way. कि मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में. सो अगर मैं एक्टर नहीं होता, आई वुड स्टिल बी रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन सम वे और द अदर, एंड आई वुड हैव बीन अ मजिशियन इफ नॉट एन एक्टर, फॉर श्योर. इनफैक्ट मैंने पायलट भी शूट किया था. इट वॉज सपोज टू कम आउट ऑन आई थिंक Star 1, and it was based on street magic, where I was literally, I went to India Gate, I did some illusions with the cops over there, with the random people, no paid audience, nothing of that sort. It was all natural and all organic. CP में घूम घूम के हमने पायलट बनाया था, NSP में पायलट बनाया था, बिट्टू टिक्की वाले के बाहर. So at all the places where I could find crowd, I did something or the other, and that pilot actually worked a lot. But इससे पहले कि वो on air जाता या उस पर कुछ भी कागजाती वर्ड वर्क होता, उससे पहले क्योंकि के लिए मैं लॉक हो चुका था. सो आई हैड नो टाइम टू डू एनीथिंग एल्स. Well, that was also magical. But yeah. That was also magic, yeah. Thank you so much. So hi everyone, and hi Pulkit sir. You have such an amazing personality, just like me. Just kidding. Just kidding. So my question is, first of all, my name is Bharat Jethwani. My question is, why don't you do like such action movies? You have such an amazing personality. So you haven't been offered yet, or you are not interested in such kind of action movies? No, I love action, यार. I love to watch action. I also love to do action. तैश में मुझे थोड़ा सा मौका मिला था करने का, and it actually is very addictive when you are appreciated for action and those kind of scenes as well. There have been offers with in action genre, but मुझे ऐसे लगता है कि मतलब everybody is coming out with us also to do stuff like Tiger. अभी टाइगर है, वो उड़ उड़ के लड़ाई करता है, मैं ज़मीन पे लड़ाई करूँगा. सो आई एम जस्ट स्काउटिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट विच ऑल्सो हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ इमोशन बिहाइंड द एक्शन दैट कम्स ऑन स्क्रीन, and not just for the sake of doing action. And hopefully something will be coming out very soon. Thank you so much, and Thank you. appreciate your work, appreciate your achievements. Thank you. Thank you so much. There. Hi, my name is Vibhuti. Vibhuti, hi. Yeah. So everyone's talking about your acting. Do I I'd know like you? to, Already? क्या हम रॉबी के पार्टी में मिले थे? नहीं, just kidding, please. Okay, so everyone's talking about your acting skills, which are really very good, but I'd like to talk about your dress sense. So right now you're wearing Afghan pants and you're wearing this lovely, jacket over it. So it's a very rare and a different way of dressing. And I've seen you dressing a little differently otherwise also at other parties. So I'd like to know what inspires you and who inspires you to dress like this, because it's always so different and dapper, and you look good otherwise, but you really know how to accentuate your body. So Thank you, really appreciate that.
Well, I believe, if somebody asks me कि आपकी fashion statement क्या होगी, I believe in gender fluidity. And that is what I actually try to communicate also through what I wear and the kind of accessories I use. And I don't shy away from uh, using a woman's purse as well. I don't shy away from wearing heels as well because I don't think, and actually, पता है क्या? Heels were actually made for men. The heels were actually made for men in the era when some guys who used to be at the top of the hierarchy, उनको और थोड़ा वो status physically देने के लिए उनके लिए heels invent किए गए थे. They were not supposed to be for women anyways. And आज जब हम as men heels पहनते हैं तो we are put in different kind of categories. I feel fashion is a very fluid thing and it should not be restricted to certain genders, and that's what I actually use as a philosophy. Also, जैसा मैंने पहले कहा कि मेरी 5 मासियाँ हैं, 3-4 चाचीज़ हैं. So I was the first born kid in my family and it's a joint family. So मेरे life के शुरू के 5 या 6 साल before my younger brother was born, I was the only kid. अब ये एक लौता लौंडा सिर्फ 10-12 औरतों से घिरा हुआ है पूरा टाइम. So I learned sewing also, I learned roti banana also, I learned all kind of makeup things also. I got fascinated by dancing also. I used to do Kathak wearing ghungroos as well. And I used to go for my horse riding lessons as well, used to play cricket as well. So I've been very gender fluid since my childhood, and that's all thanks to my upbringing. And I think that is what reflects in my choice of clothes as well. I concur whatever he said. Hi. बट Okay. मैंने अपनी जर्नी थिएटर में स्टार्ट की थी 4 साल पहले दिल्ली में. Okay. और आप यहाँ पे काम कर रहे Sorry, थे. what's your name? सिमरन. Simran. Oh. प्रॉपर बॉलीवुड कहिए नेम. कहिए. एक्चुअली एज एन एक्टर मैं हर परफॉर्मेंस के साथ ग्रो करती हूँ, राइट. सेम वे मैं थिएटर में कर रही थी, आप यहाँ मूवीज़ में कर रहे थे. हर प्रोजेक्ट के साथ आप ग्रो कर रहे थे. बट आई वॉन्ट टू नो कि एज एन एक्टर डायरेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एक्टिंग ग्रोथ में. Of course, it's a very good question. I'll give you an example of one of the finest directors that we have in the industry, and I have been lucky enough to work with her. That is Zoya Akhtar. Yes. So I worked with Zoya for Made in Heaven and Made in Heaven 2, and literally I didn't even realize how she got work out of me. I didn't even realize that this is what she actually looked at when she was talking about the character. She made it a cakewalk for me because first of all, the most important thing is the writing that helps you decipher and break it down in terms of character. कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि यार हमारी बैक स्टोरी क्या होगी, ये कैरेक्टर किधर से आया होगा. आई एम सेइंग होगा बिकॉज आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. सो ये कैरेक्टर किधर से आया होगा, इसने क्या क्या किया होगा लाइफ में, what are the thoughts in this person's head, and I believe in organically letting that happen. जब आप एक fairy tale सुनते हैं बचपन में, when you hear or read or see the visuals of some fairy tales, आप अपने दिमाग में एक कहानी visually भी देखते हैं. करेक्ट. आपकी दादी, आपके दादा, मम्मी, पापा जो भी आपको एक कहानी सुना रहे हैं, आप उसको विजुअली भी देखते हैं. वो आपकी विजुअलाइजेशन है. दैट इज़ वॉट एज एन एक्टर यू विल डू व्हेन यू कम टू अ प्रोजेक्ट और अ फिल्म. व्हेन यू गो थ्रू अ स्क्रिप्ट, दैट इज़ वॉट यू डू. करेक्ट. आप स्क्रिप्ट सुन रहे हैं और आपके दिमाग में विजुअल्स चलते हैं कि हाँ ओके, अब कैरेक्टर ने ये किया, अब इस कैरेक्टर ने ऐसा किया. ओ दिस वन इज़ वॉकिंग विद अ लिम्प, दिस वन इज़ गॉट अ स्कार हियर. Oh, acha. And in that, a lot of influences in your life and a lot of experiences in your life will also help you make those decisions. That is what you'll do as an actor from your side. But then the director will come on board. And the director, who's the main storyteller of whatever story is being told on the screen, that's the director's main job, correct? कि जो स्टोरी सामने आ रही है लोगों के, उसकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, उसमें शॉट टेकिंग कैसी है, किस तरह से कैरेक्टर्स की जो एक डेप्थ है वो लोगों से कनेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है. दैट इज़ वेयर द डायरेक्टर कम्स ऑन बोर्ड एंड द डायरेक्टर डिसाइड्स
how much of rage would the director like in this particular frame? How much of love would the director like in this particular frame? How much of empathy? How much of security, insecurity, and whatever character traits you go through. So it basically becomes a jugalbandi. You need to be prepared with your homework, and if you're lucky to have the best of director like I have been, somebody like Zoya Akhtar, I think it becomes a cakewalk because she knows exactly what character needs to do. She knows exactly how she is looking at her story on the screen, and I then start thinking from the director's perspective. मेरे में बिल्कुल ऐसा लालच नहीं होता कि मेरे कितने सीन हैं या मैं एक सीन में मेरे कितने डायलॉग हैं. If genuinely, if you watch Fukrey 3, you will realize I probably have the least amount of dialogues in the film. Right? Yes. I literally have the least amount of dialogues in the film, but I'm still the hero out there. Chucha has the maximum amount of dialogues in the film, and he will make you laugh the most. So that is his space. This is my space. Then there is Manjot, who's Lali. He gets all the cuteness, and he's also trying to get little bit of sensibility into her talks. So that is his space. Then comes Bholi, who's supposed to be comical, but also maintain a certain threat. So ये सारी discussion director के दिमाग में होती है, जो हमें भी निकालनी पड़ती है, and the director makes it easier for you to portray those characters. So I think a director's vision is very, very important. And when you look at a scene or an entire script or a film, through the director's perspective, that journey becomes much more easy. And इसीलिए आप कितनी बारी देखते हैं कि कुछ एक्टर्स जो बहुत अच्छे होते हैं वो एकदम से कुछ अजीब सी चीज़ें कर रहे हैं स्क्रीन पर कि यार ये क्यों किया, ये वाली फिल्म ऐसे क्यों करी, ऐसा क्यों किया. इट्स नॉट दैट, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब. यू कम टू द सेट, यू डू योर ओन होमवर्क, और आप वहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं. यू आर देयर बिकॉज यू हैव बिलीव्ड इन अ सर्टेन डायरेक्टर एंड हिज और हर विजन, and you surrender to that director. Once you have surrendered, there's nothing else you can do. You just go with the flow after that. But surrendering is very, very important. And then owning up to it. नहीं अच्छी हुई तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं अच्छा हुआ, उससे सीख के you do something better in the next one. और अगर बहुत अच्छी हुई तो यहाँ नहीं चढ़ाने का, बस उससे भी सीख के do much better in the next one. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि से लेके फुकरे तक का आपका क्या सफ़र है, क्योंकि सीरियल से फिल्म आना बड़ा मुश्किल होता है, आपने कैसे क्रैक की फिल्म्स? यार पता है, दिल्ली में शालीमार बाग से निकल के मुंबई आना और बैंड्रा पाली हिल में रहना भी बहुत मुश्किल होता है. आपको सिर्फ एक एक स्टेप अपनी मंजिल की तरफ रोज़ लेना है विदाउट एनी डाउट. आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ. दिस इज़ द ओनली थिंग दैट हेल्प्स मी, विल ऑलवेज हेल्प मी एंड हैज़ ऑलवेज हेल्प मी. Always just be thankful, full of gratitude. और बीच में ऐसा भी टाइम आया जहाँ पे मेरे अंदर खुद इतने डाउट्स आए, and I've seen my fall at that time. But the only thing that has kept me going is this faith and this belief in myself कि नहीं, यही करना है और यहीं पे पहुँचना है. अब वहीं पे जुगाड़ भी काम आते हैं. ऐसे नहीं पहुँच पा रहे तो आप ये वाला रास्ता पकड़ के जाओगे, ये वाला रास्ता पकड़ के जाओगे, बट वही रास्ता जिससे आपको भी नींद अच्छी आएगी. So that's the only thing. जुगाड़ यही किया था यार, अपनी जिद पकड़ के रखना बस. देयर इज़ नथिंग एल्स यू कैन डू. मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपको मेरे पापा, मेरे चाचू सबसे मिलवा दूंगा, आपको लगेगा ये इस घर से निकल के पहुँचा भी कैसे यहाँ पे, इनको अग्री कैसे कराया इन्होंने. उनको अग्री नहीं कराया, मैंने उनका काटा. बिकॉज मुझे ये विश्वास था कि अगले 1 साल के अंदर अंदर अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो फिर मैं नालायक हूँ, फिर मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता. So I just work towards that thing every single day. और वो 1 साल के अंदर मेरे हाथ में क्यों की आ चुका था, और तब से my family has been very, very proud of me. तो basically उनको उन्हीं पे विश्वास कराया मैंने, और कुछ नहीं कराया. So Nayan, this girl Nida, Yeah. Nida, right? Hi. She has been following me since I think the first day of my work. And she has been, like, I see her anywhere I go, and anything. Please come here near the stage. She is Everybody should see. like the true definition of love for me. तो बोल दो सबको. हेलो. और मैं अच्छा लगता हूँ ना? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा.
No, but seriously, I just wanted to share this with all of you that this is one girl who has always been caring for me and always been showering me with the love and best blessings. And literally, there have been times जब मैं किसी इवेंट पे जाता हूँ और ये बेचारी कहीं पीछे सिक्योरिटी के पीछे धक्के वक्के खा के दूर से मेरी फ़ोटो खींच के फिर पोस्ट करती है और बिकॉज आई फॉलो अ लॉट ऑफ माई फैंस एंड माई फैन क्लब्स सो आई गेट ऑल दोज नोटिफिकेशंस एंड आई सी हर पिक्चर सडनली पीछे मेरी पूरी सिक्योरिटी टीम के पीछे इतनी सी आँख दिख रही है और निदा दिख रही है एंड आई एम लाइक तू के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही इधर अभी है। इनको किस लिए बुलाया गया इधर? जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दहाड़ी, जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दहाड़ी, मैं अनजानी को ये पानी लेना जावे रोड नर्सरिया, मुन्ने आवे कचियां कलियां ना तोड़ नर्सरिया, मुन्ने आवे कचियां कलियां ना तोड़, तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल। Thank you so much for being here and thank you for your time and for energy, everybody. And thank you, Jagran, for doing this wonderful event and this initiative of letting people have these wonderful talks. And thank you for getting him to MC it, correct?